What's it? Good morning, Sunil sir. Sorry, sir. Good morning, everyone. Gotenkar sir, we can start. Gotenkar sir. Okay, sir. Okay, sir. Hello. Good morning to one and all. Myself, Professor Shashank Y. Gotenkar, Assistant Professor, Electronics and Telecommunication Department at MCT's Rajiv Gandhi Institute of Technology. To start today's session, I would like to welcome our Principal, Dr. S.U. Bokade sir, then our Vice Principal and HOD of EXTC Department, Dr. S.D. Deshmukh sir, and Deputy HOD of EXTC Department, Dr. Ponar Sonar madam. Also, I would like to welcome the guest speaker of this session, Dr. S. Karamchandani sir, who has done his Ph.D. from IIT Bombay and currently Associate Professor at DJCOE. Today, sir is going to shed light on the topic of convolution neural network. Now, I invite Dr. Poonam Sorar madam and request her to brief about this session and also give introduction of our guest speaker. Over to you, madam. Shashank sir. Distinguished speaker for today's session, Dr. Karamchandani sir, our respected Vice Principal, Dr. Sanjay Bokade sir, and the head of the department as well. Our respected Honorable Principal, Dr. Sanjay Bokade sir, and dear faculty members, students, and participants. A very good morning to all of you present here on this virtual dance. I, Dr. Poonam Sonar, Associate Head of Department of Electronics and Telecommunication Engineering, MCT's Rajiv Gandhi Institute of Technology, on behalf of my department, warmly welcomes you all on this last day of 3 days faculty development program on Industry 4.0, the way forward. On the first day, we had a very informative session in this segment by Dr. Satyanarayana, from the who is a senior scientist from the TFR, and the sir has given a very elaborative session on the sensors and signal processing, the key enablers of the IoT system. On the second day of FDP, again we had a very relevant, informative, and interesting session on the topic cyber security by Mr. Sagar Gajra, who is working as a manager in Grant Thornton in the cyber security practice. We received a very good response from the participants, and I am very happy to share that we are having participants not only from the Mumbai region, from the Maharashtra region, but also from the different parts of the India. We are looking forward the same response from all the participants in the 2 days sessions. Now, let me brief about the objectives of this FDP to create awareness about Industry 4.0 among the academia and to build the next generation academic institutions. To empower the academic diaspora for develop academic courses in accordance with the Industry 4.0. The next objective of this FDP is to initiate and to promote innovative frameworks at academic institutions. Also, one of the objectives of this FDP is to enable the research scholars, academic faculties, and industry for state-of-the-art collaborative research. So, we have arranged our series of the sessions in this FDP in order to achieve our goals and objectives of this FDP. Now, today we are having a very great personality as a resource person who will be taking a session on the convolution neural network, Dr. Sunil Karamchandani sir. So let me introduce brief about the today's resource person. Dr. Sunil Karamchandani obtained his doctorate degree from the Department of Electrical Engineering at IIT Bombay in the area of wireless body area networks. His contributions are recognized in the Nature India Proceedings of IEEE and generated
Extensive news coverage with the leading tabloids newspapers, namely the Financial Express, Hindustan Times, and the Lokmat. He was a technical consultant for the Blue Star Infotech, providing interactive solutions for segmentation of abdominal aeronal systems in collaboration with Barco UK. He is the Toys recipient of the Microsoft Travel Award in 2010 and 2012. Currently, he is associated with Department of Electronics and Telecommunication Engineering, DJCOE College of Engineering, University of Bombay, and is the IDC coordinator responsible for development of innovative ideas in association with the DST, that is the Department of Science and Technology, and the National Entrepreneurship Network. He has over 50 prominent publications in journals and conferences of repute, and author 2 books on applied mathematics over a teaching career spanning more than a decade. He is an avid international traveler, more recently having delivered a talk on promising textiles celebrating the silicon of the future at Erul Vico, University of Arad, Romania. Thank you, sir, for accepting our invitation and taking time from your busy schedule. Now I request Sunil sir to take over the session. Yeah, thank you, ma'am. I hope I'm audible because I'm using, yeah. So I'll just share the screen. Okay. Yeah, so for my topic of my, yeah, just a second. Yes, just right. Okay, so I'll be speaking today on convolution neural network, and that is something which helpful in making sense of the visual data. Okay, now this convolution neural network is sort of a ladder. Please unmute yourself. By mistake, it is mute, sir. Sir. Okay. Mute okay. Sir, please unmute yourself. Hi, Okay. sir. Oh, sorry, sir. Right. Okay. Yeah. Sorry. So we begin with convolution neural network. Okay, something which makes sense of the visual data, right? So as I said that in 2012, the image processing and video processing had stopped. Research areas were saying now nothing can be done in image and video processing. Everything that has got to be done, whether it is content-based image retrieval, okay, or classification, object detection, segmentation, full stop. Okay, and then suddenly this thing comes up and they say, oh my God, this is going to give us better accuracy. So what happened in 2012 that suddenly, till today, 8 years hence, the research is booming up and carrying on day by day. And that's where, actually this is sort of thing which is got into what today the buzzwords are deep learning. Okay, so this was the starting of deep learning. Okay, so let's see a little bit of history. So चांद पे 3 लोग गए थे, नाम सिर्फ एक का आता है. So here are the 3 people. Here you have Ilya Sutskever, you have Jeffrey Hinton, who was the guide, but the man who did it is behind in the shadows over here, Alex, the Alex behind the net. Okay, so he was the person who actually started this convolution neural network, and that is why most of they actually use this program, and that's called as the LXNet, which I'll be speaking about later. Okay, so what happened? How Alex was not a brilliant student. He was a PhD student under Jeffrey Hinton, and he wasn't. He was a good researcher. So what he did was he researched neural networks very well. Right now, before I go to CNN, I'll be hopping in and out of neural networks, and I understand there are few people who have the students who have not gone into neural networks. So I'll be just keeping the lines parallel between CNN and simple NN.
Okay, and I think I will be able to put my message across. Right now, so as I said, Alex did his research very thoroughly. Okay, he picked up things from the neural network and then modified it. Okay, let's see how he did it. So in neural network, let's see what happens in neural network. So he said, भैया ये neural network क्या करता है? Basically एक डब्बा है, वो डब्बे के अंदर हमारे पास हम डब्बे के बाहर कुछ इनपुट देते हैं और आउटपुट में हम चाहते हैं कि हम उसको क्लासिफाई करें. ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 4 ऑब्जेक्ट को हम क्लासिफाई करें. तो न्यूरल नेटवर्क बेचारा क्या करता है, पूरा मैथमेटिकल है, सिर्फ नाम पता नहीं कहां से न्यूरल नेटवर्क को, बिकॉज इट मिमिक्स द ब्रेन एंड ऑल दैट, यू नो, द कनेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स टू द ब्रेन. तो आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाओ तो तुरंत आपके ब्रेन में मैसेज जाता है. तो वहां सबसे ये नाम आ गया न्यूरल नेटवर्क का, और इट इज गॉट, you know, that's just this concept on which it is based. So what basic neural network is a dabba. Okay, so that dabba you give certain set of inputs, बोलो भैया मुझे ना इसको अलग अलग क्लासिफाई करके दो. तो वो क्या करता है, जैसे 4 ऑब्जेक्ट है A B C D, तो क्या करते हैं भैया, एक लाइन इधर ब्लू लाइन बना देता है, एक रेड लाइन बना देता है. So it's actually a line, equation of line y is equal to mx plus c. तो y is equal to mx plus c करने के लिए ये पूरा न्यूरल नेटवर्क का होल थिंग came up. Okay, and he said, Priya, okay, this is what neural network does. It classifies and gives me 2 equations of lines. Okay, then neural network started in 2000, and every Tom, Dick, and Harry in every discipline, you know, they even said by neural network can help you to predict what Shakespeare would have written today. You know, so it was that bad. And no, there was some class of society which said, क्या है, कुछ भी ये लाइन मैं इधर भी बना सकता हूँ. राइट, सो ही सेड ये लाइन में कहां पे भी बना सकता हूं ना, ये लाइन इधर भी आ सकती है, ये तो भी क्लासिफाई हो गया, ये लाइन इधर भी आ सकती है तो भी क्लासिफाई हो गया, ऐसी कौन सी लाइन पकड़ूं. सो देन दे स्टार्टेड रिसर्चिंग. भैया ये न्यूरल नेटवर्क में ना तो कोई विश्वास ही नहीं करता है, तो सिर्फ लाइन बनाता है, ऑब्जेक्ट के बीच में बोलता है क्लासिफाई कर दो. तो फिर दिस नाउ कम टू 2005, you know, and actually I had a paper on neural networks, and then I was presenting at this EMBC conference. And I met this fellow called as Metin Akay, you know, METINAKAY. You should see his papers, you know, brilliant. Until today, he's very active. He's the head of Engineering and Biology Society. And he said, sir, आप तो outdated हो गए हो, ये ना न्यूरल नेटवर्क पे अभी कोई काम नहीं करता. 2005. तो वो कहते भैया अभी तो सपोर्ट वेक्टर मशीन पे जाएंगे. अब ये सपोर्ट वेक्टर मशीन कहाँ से आ गया, तो वो बोल रहा है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन में, ओके, राइट, चलो ये आ गया मेरा सपोर्ट वेक्टर मशीन. तो वो कह रहा है भैया तुम तो कोई भी लाइन बना देते हो, ऐसा लाइन नहीं चलेगा. तो ही सेइंग इन ऑर्डर टू क्लासिफाई, ओके, I have plenty of these lines, so I am going to select that particular line which gives me the maximum margin. So these are the blue dots and these are the red dots. So I want to say maximum separation जो होता है, मैं वो वाली लाइन पकड़ूंगा. So you have this line, and this is the line which gives you maximum separation between the blue and the red. So that is where SVM came into picture. तो थोड़ा लोगों को ना भरोसा लगने लगा, अरे भैया कुछ अच्छा समझदारी का काम चल रहा है. ठीक है, now let's see what happens. So he said, okay, now support vector machine भी चल गया, still people are not, you know, this. So what he did was, Mr. Alex, he went still before. हमेशा याद रखना, कुछ भी रिसर्च करने के लिए जितना आप आगे जाते हैं ना, उतना आपको पीछे जाना पड़ता है ढूंढने के लिए. तो ये भैया ये चले गए कहां पर, ये this is 1998. Jan LeCun, okay, he is now at Facebook, and in fact he's the one who did his postdoc under Jeffrey Hinton later on in 2014. But he had, you know, he had this handwritten recognition done in 1998 using this his ELINet file. Okay, so ये जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, ये तो बना था 1998 में, उसके हैंड रिटन डिजिट्स को क्लासिफाई किया था, सिर्फ 0 to 9. ओके, तो इसने कहा अगर ये यान ली-कुन कर सकता है तो मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ. So he was in that way a very good student. I have this website. I don't know if I click on this, it will go here. Okay, I have this website. Wait 1 second. I'll you share. I have his website right here. Okay, so look at this Jan LeCun website. You know, this is what he did in 1998. So if you see here, he has this numbers. He has these numbers 5, 6, 7, 8, 0 to 9,
and he gives a lot of data, you know, and he says all तरीके के से 6 और 7 और 8 लिख लिया और उसने कहा कि ये बराबर मेरा prediction कर रहा है, ठीक है? So this was what he thought can be exploited further, and that is where, you know, AlexNet in 2012, right? He did something called as ImageNet. Okay, so that AlexNet called as ImageNet. It was a system that managed to sort 100,000 photos into 1,000 categories within 5 guesses, and it had an accuracy of 85%. So इसी काम को उसने आगे PhD में सब हम यही करते हैं कि काम को आगे बढ़ाते हैं, but somewhere something gets ticked off. So let's come back to business. Yes. So let's go ahead. So let's begin now with convolution neural networks. Okay. Now, so what happens in this convolution network? It is just a 3-step process. Just a 3-step process. यहाँ पे आप और CNN फक्त image के लिए होता है. It is based only on image and video. People rarely apply CNN on one-dimensional signals. It is mostly used चेहरा, इसके लिए representation of visual data. चेहरे पहचानने के लिए ही convolution neural network होता है, ठीक है? So what are there's 3 stages. One is the convolution layer, second is the pooling layer, and third is the fully connected layer. So 3 चीजें अभी करनी है, ठीक है? So अब ये आपकी इमेज है, यहां से आपका convolution layer बनता है. Let me take a pen from here. Okay, right. So ये आपका convolution layers बनते हैं, right? ये भी आपका convolution layer है, ये भी आपका convolution layer है. 3 convolution layer, आप कितने भी convolution layer बना सकते हैं. ये भी अभी तक वो न्यूरल नेटवर्क का चस्का गया नहीं है भैया कि कितनी भी लाइन बनते हैं, इधर कितने भी आप convolution layer लगा सकते हो. Again, depending on problem to problem, application to application. Correct, right? But then there's still now there's something called as explainable AI, जिसमें अभी लोग बोल रहे हैं भैया ऐसे होता तो क्यों होता है? You know, we are going उल्टा, reverse engineering. New branch, explainable AI. Why things are happening like this? Why the hell should I have 3 convolution layers? Why should I do this pooling? What is the use of this fully connected layer at the end? वो सब अभी चालू हो रहा है काम. ठीक है, let's revise this CNN first. So पहले आप क्या करते हैं, यहाँ से ना एक convolution layer बनाते हैं, फिर convolution layer के आप छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं, फिर एक और convolution, फिर उसके छोटे-छोटे. So इधर ये इसलिए करते हैं हम, ओके, ये इसीलिए करते हैं ताकि हम इमेज को के फीचर्स निकाल सकें. पहले हम सब पेपर लिखते थे, ठीक है, इमेज लिया, पीसीए लगाया, वेवलेट लगाया, कॉन्ट्रोलेट लगाया, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट लगाया, फिर और कितने थे, हाँ, हिस्टोग्राम ऑफ ग्रेडियंट लगाया. सब हम दुनिया भर के क्लासिफायर करते थे. भैया ये तो ये फीचर दे रहा है, ये तो मतलब इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स दे रहा है, इसके से मैंने 50 कंपोनेंट लिए तो भी मेरा आउटपुट आ गया. इधर वो जो काम है वो आपको अभी नहीं करना पड़ेगा, वो सब पेपर अभी हम नहीं लिख सकते, ठीक है? अभी हमको यही करना पड़ेगा कि somebody has raised the hand. Any doubts? Hello. Sir, let me check who has raised the hand. Yeah. If there's anything, please let me know. Yeah. Right. Mr. Atul, do you have some doubts? Okay, I'll continue. You can interrupt in between. You know, it's going to be a drag. You know, all this little bit of mathematical stuff and all this. So that's why I started with a bit of history and all that. But otherwise, it could be a little bit of drag. Unless we actually program it ना, तो इतना मजा नहीं आता है. और बाद में जब ये करने के बाद हम प्रोग्राम भी करते हैं तो ऐसे लगता है इतना क्या पढ़ा हमने, तो 4 लाइन के कोड में आ गया, ठीक है? Something like that. So all this, you know, is what all these 3 जो ये वाला बीच वाला पार्ट करता है, ये जो बीच वाला पार्ट करता है, okay, so that part is basically, it's like a नींबू. You know, नींबू को आप कितना भी चूसो, उसको कितना भी फोर्स करो, वो जूस निकलते ही जाएगा. उसको फेंकने के बाद ऐसा लगता है अरे थोड़ा बहुत जूस और निकल सकता था. So it is like that. The convolution layers are you're squeezing the lemon to take out as many features as you can. I think I have one more diagram on this convolution layer. Okay,
So this is an example here. Okay, here you have got at the input, you have got vehicles, you have got 10 vehicles, you have got car, truck, van वगैरह सबकी फोटोएं हैं. आपको फीचर नहीं देना, सिर्फ सबकी फोटोएं देने का. वो फोटो आपको क्या करेगा, यहाँ से उसके कन्वोल्यूशन लेयर बनाएगा. यहाँ से ये जो सब ये डब्बा दिखता है ना, ये एक कन्वोल्यूशन लेयर है, फिर ये दूसरा कन्वोल्यूशन लेयर है, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे कन्वोल्यूशन लेयर डब्बा बना है. फिर वो कन्वोल्यूशन लेयर कुछ कुछ हिस्से उसको ये लोग कहते हैं, पूलिंग, लेकिन डीएसपी में वो लोग बोलते हैं सैम्पलिंग. ओके, सो आई कम टू दैट स्टोरी लेटर. ओके, सो है सब वही, दुनिया में सब गोल गोल करना पड़ता है. ओके, सो व्हाट दिस इज नॉट, ये पूलिंग किया, इसका कुछ सैंपल ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड ए सैम्पलिंग. और कंप्यूटर वाले बोलते हैं पूलिंग. डीएसपी थोड़ा कम ध्यान देते हैं. ओके, तो वापस अभी ये देखो, ये नींबू चूसते जा रहा है. ओके, सो यहाँ पर आ गए ना, इसके यहाँ तक, दिस इज द एंड. भैया इसके आगे और फीचर्स में नहीं निकाल सकते. सो एवरी कार, ट्रक, वैन, बाइसाइकिल का हेडलाइट, बॉनेट, टॉप, ग्लास, सब कुछ ये सब में आ गया. भैया एक बात बताएगा कि ये बॉनेट है, एक बात बताएगा ये हेडलाइट है, एक बात बताएगा ये कार की बॉडी है. That is what it is, and then you are differentiating between these 10, okay, these 10 objects, right? And जो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, flatten, okay, this is your simple neural network. छोड़ते ही नहीं है इस बेचारे को, right? मैंने तो एक्चुअली 2008 के बाद ना बंद कर, मेरे गाइड भी बोल रही थी जब मैंने पीएचडी किया था, भैया क्या न्यूरल नेटवर्क तंग आ गया, छोड़ दो उसको. और फिर मैंने छोड़ दिया. मुझे क्या पता था कि 2012 के बाद वापस ये सब चालू हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो न्यूरल नेटवर्क ये वाला पार्ट है ना, वो उसकी न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से ही रखा है. दैट मीन्स वैसे भी हम यही करते थे, राइट? पाइपलाइन ऐसे ही होता था. हमारा पहले इमेज होता था, यहाँ पे होता था इमेज, यहाँ पे ये देखो फीचर लर्निंग होता था, फीचर लर्निंग के बाद होता था क्लासिफायर, राइट? तो क्लासिफायर कौन सा है मेरा? न्यूरल नेटवर्क क्लासिफायर है. तो ये जो फीचर वेक्टर जो हम निकालते थे, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दीस 3 things. Okay, 3 things which are borrowed, stolen, plagiarized from DSP and mathematics. Okay, next. Yeah, and then here, like your neural network, here you have a softmax. What is it called? I forgot. Yes, it's sort of a discriminator. So here you have certain functions, softmax functions, sigmoid functions, which actually decide. You know, so here in the end, if the output of this neural network will have 10 neurons. Okay, so suppose 10 neurons में suppose ये 1 आया और ये सब 0 आया neural network output, तो वो कार है. फिर suppose ये 0 आया, ये 1 आया, तो वो ट्रक है. तो वो neural network ऐसा ही आउटपुट देता है क्लासिफायर में. 10 में से कोई भी एक का वैल्यू जो है बहुत हाई रखता है, मतलब थ्रेशोल्ड के ऊपर रखता है, एंड दैट पर्टिकुलर नोड करस्पॉन्डिंग डेटा, इट इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. इसे दूसरा नाम भी ये कंप्यूटर वालों ने दिया है, सिमेंटिक लर्निंग. तो ये जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है ना, उसको लोग बोलते हैं सिमेंटिक. सिमेंटिक मतलब टू नो द ऑब्जेक्ट्स और टू नो समबडी. तो इसके लिए इसका नाम है सिमेंटिक लर्निंग. ओके, एंड there's one more term for this. I forgot. One whole sampling or something like that. When you know, when you have 10 outputs, you give एक जो चाहिए उसको आप 1 बना दो, बाकी सबको 0 बना दो. खैर ठीक है, उस पे हम नहीं जाते. This you should know. These are the words that they use. This is called as semantic learning. Okay, so I hope you know this block is perfectly clear of what actual convolution neural network does. Okay, तो ये नींबू इधर आ जाता है बीच में, बाकी ये सब आपका न्यूरल नेटवर्क होता है. ठीक, चलो अब आगे जाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स सी कन्वोल्यूशन मतलब क्या, फिर कन्वॉल्व करने का. सो अभी हम थोड़ा बहुत अभी थोड़ा जो I hope this will be there for the students because the teachers and all they know about this. So first let's target the convolution layer. So convolution layer मतलब क्या कि हम क्या करते हैं, एक इमेज होता है F, उसको हम एक मास्क W से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करने के बाद मास्क को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करते हैं और फिर शिफ्ट करके वापस. सो कन्वोल्यूशन बेसिकली इज 3 processes: multiply, shift and add. Okay, multiply, add and shift. Okay, so multiply, add and shift. अच्छा, ये स्लाइड इधर क्यों आया? ठीक है, अब
अब चक्कर ये है कि सब लोग अभी जा रहे हैं, हर एक कॉलेज में आ रहा है कि हमें डेटा साइंस का ब्रांच चालू करने का है, ठीक है। सो अब डेटा साइंस का जब ब्रांच चालू करना है तो आपको CNN वगैरह सब तो डालना पड़ेगा। तो अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर ये अभी हमको ना डीप लर्निंग सिखाने का है बच्चों को, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए डू आई नीड टू इंक्लूड इमेज प्रोसेसिंग, डू आई नीड टू इंक्लूड कंप्यूटर विजन। तो पहले मैंने बोला भैया ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको तो करना ही पड़ेगा, इमेज प्रोसेसिंग का पूरा कोर्स करना पड़ेगा, शायद थोड़ा कंप्यूटर विजन भी डालो और फिर डीप लर्निंग का। So initially that is what I told them, भैया तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा। Then I realized that if you look at these, Coursera courses and all that, so उसमें क्या करते हैं कि Coursera का अगर 4 वीक का कोर्स है ना, तो 1 वीक इमेज प्रोसेसिंग डाल देते हैं, भैया उसमें जितना सीखना है तुम सीख लो और उसके बाद चालू कर देते हैं। So I was having my doubts, and then I said, maybe we can tweak here and there. Why? Because these, as I said, it's all plagiarized. So convolution ठीक है, but the way the terms are, installed, it's very easy to sort of sidetrack the people in machine learning and tell them, bhaiya aisa hai, and you don't need to actually go into the mathematics or the DSP of all that, or even the image processing for that matter. Let's just see for a few slides. Okay. So right. So then this convolution से जो हम करते हैं इमेज प्रोसेसिंग में, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लो पास फिल्टरिंग करते हैं, ठीक है। सो लो पास फिल्टर क्या करता है, so it is used to remove the noise, but when you remove the noise, then these images, if you remove this noise, try to remove some noise here, then these two images, they sort of become blurred, okay। And if you see, this is the filter which is applied। तो हम लोग इमेज प्रोसेसिंग में क्या बोलते हैं, इमेज प्रोसेसिंग में हम लोग बोलते हैं मास्क अप्लाई किया, ठीक है। और डीएसपी वाले क्या बोलते हैं, हम लोग ने फिल्टर अप्लाई किया। लेकिन चलो अभी इनको सिखाने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं वी हैव अप्लाइड वेट्स। इसके लिए वो पहले वाले स्लाइड में भी देखो W लिखा है, सो इट इज लर्निंग। सो दिस इज नॉट अ मास्क, दिस इज द वेट, दिस इज ऑल्सो नॉट अ मास्क, दिस इज द वेट। सो जस्ट बाय चेंजिंग द टर्मिनोलॉजी, so they are getting it. So they say, if you apply a 3x3 mask, then this is the blurring. If you apply the 5x5 mask, so if you increase the level of the mask, the level of the blurring also increases. Okay, so level of the blurring increases means you are getting low pass filter component. मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में, कार का बॉनेट ढूंढना है, ठीक है। कन्वोल्यूशन लेयर क्या करता है, कार का बॉनेट ढूंढता है, कार का हेडलाइट ढूंढता है। दैट मींस दोस फीचर्स वो कहां से आएंगे, वो लो पास फिल्टर से ही आएंगे ना। फीचर्स ऑफ द कार, कार का कलर कौन सा है, ठीक है। सो बॉडी का शेप, सो ऑल दैट इज गोइंग टू कम बाय लो पास फिल्टरिंग। सो CNN में क्या है, एक लेयर इज नथिंग बट लो पास फिल्टरिंग, सबको बुद्धू बनाते हैं, ठीक है। सो एज वी नो अगेन दैट वी increase the size of the filter, okay, as n increases, as you see here, then it becomes more and more closer to the actual one. So this is what low pass filtering. So once again, this you all will be very familiar. This is the original image, and then you apply 3, 5, 9. So it goes on blurring. You get a very blurred image. So if you want the object at this particular level, so your convolution layer, as you go on doing the convolutions, then it becomes more and more blurred. So you should know which part. So if you applying more layers, it will be more blurred. So you should know exactly. वो भी हमें पता नहीं चलता है. So that is also again by trial and error. Similarly, this is one part of it. Second, as you know, low pass filter गया तो high pass filter भी आएगा. So high pass filter में हमें पता है कि क्या करना है कि sum of all this has to be equal to 0. Why the sum has to be equal to 0? Because low pass filtering is averaging, right? And if the sum is 0, the average value is 0, so no low pass filtering will happen, and we will get only the high pass filtering. So here I've shown two masks, one here. This is the first order derivative. This is the second order derivative. And here, if you see, when you take the second order derivative, here, what happens? The edges are not completely visible. And here you get more prominent edges. So once again, if you want the edges of the object, you have to do high pass filtering. तो मुझे बताओ, अभी हमको कोई जरूरत नहीं है image processing पढ़ाने की. These are the weights you should apply to the CNN. Okay, so I had to धीरे-धीरे change my mind, and let's see if we can sidetrack them. So basically, the convolution layers are nothing but बुद्धू बनाने का काम. So they are nothing but
these, and these are the actual things which was used by AlexNet in his convolution layer. One was the identity, the edge detection, sharpening, blur, and the Gaussian, right? So I told you he was a very good student. So once again, this is the whole thing. Features have to be discovered during the optimization. So when we come to support vector machine, CNN, it is nothing but optimization programmed by hand. So all this, Fourier transform, binary pattern, derivative of Gaussian, all this, they go for a toss, right? So quickly we'll go into the convolution. I was told that there would be students also, therefore I had to, go through this convolution part, right? Okay, and so this is the filter. Yes, so दूसरा वर्ड ये लोग क्या यूज करते हैं, कर्नल यूज करते हैं. तो फिल्टर बोलने की जरूरत नहीं, डीएसपी में जाने का ही नहीं भैया, सिर्फ बोलने का दिस इज द कर्नल आई हैव यूज्ड, these are the weights I have used, right? Just to sidetrack image processing, right? So you apply this over here and then you shift it, right? And you perform the convolution, then you multiply this, each element by element, add it, shift, okay? And then you get this as not the filtered output, but as the feature, right? And as we know, the feature size is n1 minus n2 plus 1. So here you have 5 minus 3 plus 1. So here you have 3 rows and then you have columns. Simple convolution, okay? This just I've explained after shifting. What happens? You come here, and then you multiply this element by element, and you get this output over here. Okay, this is simple. Okay, right? So now what are we doing? We are doing, okay, now we are shifting it by 1. That means there's a skip or a stride. So skip or a stride by 1, you're just shifting it by 1 column, we're shifting it by 1 row over here. Okay, so this is how the convolution is done. Okay, हमने इमेज प्रोसेसिंग में ऐसे कभी बताया नहीं, लेकिन जब डेटा प्रोसेसिंग वाले आए तब ये सब आ गया गिटहब पे. Okay, so this is the image. Okay, this blue part is the image and the border part is the padding that we did. Okay, so in why do we do the padding? We do the padding so that you don't lose information along the edges. Okay, it's not compulsory. Okay, and ये जो उसके ऊपर घूम रहा है, इस अभी फिल्टर बोलने का नहीं, अभी कर्नल बोलने का. So this is the kernel, and ऊपर वाला this part is your particular output. Okay, so this is, remember here we are doing stride equal to 1. Okay, so what's a stride? So when we have these equestrian events, you know, in the Olympics. Okay, so you have that horse which keeps galloping. So पहले वो एक डंडे के बाद जाता है, फिर वो 2 डंडे के बाद जाता है. So it's something like that. Okay, so again this strides is also very important. So let's see why that is important. हाँ, so हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर का इंफॉर्मेशन नहीं निकालने के लिए या कायम रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग करते हैं. डीएसपी में पैडिंग, ये लोग कंप्यूटर वाले पैडिंग बोलते हैं, but actually ये क्या है, it is upsampling. Aren't we increasing the number of samples? So it is basically upsampling, right? So here is the same thing. If the input is n cross n, padding is p, this is filter size f cross f, the output will be ये सब प्रोग्रामिंग में लगता है, हम लोग क्या मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं. अभी प्रोग्रामिंग में आउटपुट विल बी n plus 2p minus f plus 1, right? The input size minus filter size plus 1, which is in normal convolution. But if you are padding across the row and column, that will be 2p, right? Okay, and then yes, so if you do programming in Keras Python, there are 2 choices. One, it is padding. If you put valid, it means no padding, right? Then if you put same, then here we are applying padding. So valid means no padding, same means applying the padding, right? And then therefore, if you are doing padding, if you want the image size to be same, so n plus 2p minus f should be equal to n. So automatically in the program you can put the number of padding layers here. Okay, so once again padding is upsampling. Okay, right. Okay, just give me a breather, give me a second. Yeah. Yeah, just give me a second. I'll
Yes. So here we have something called, yeah. Yeah, I'll just stop for a minute, okay, and then I'll start. Just a minute. Yes, right. Now, a very important part in all machine learning, deep learning applications is that the final output that you have, okay. Now, if we have done Fourier transform, we have done cosine transform in image processing. So what do we find in the output of the Fourier and the cosine transform? The output of the Fourier transform, all the information, all the energy is compacted, you know. First DC value में all the energy is there and बाकी सब काफी value zero हो जाते हैं, ठीक है. So in machine learning, there is a concept which is called as sparsity. Sparsity means what? That when you are doing a neural network, you know, when you are using these weights are constantly being updated, you know, so that you get minimum error between the output which is required and the output which you are getting from the neural network. So you have to make it minimum. So when you make it minimum, you know, there are certain these weights are being trained and all. So you want that these weights should be as few as possible. तो बाकी कुछ वेट होंगे जो न्यूरल नेटवर्क को आउटपुट देंगे और कुछ वेट होंगे जो मुझे मतलब इतने सारे डायमेंशन के वेट चाहिए ही. So if there is a weight matrix of say 25 cross 25, I would require as much of them to be zero as possible, right? So that concept, a very important concept, it is called as the concept of sparsity. Okay, so if there are applications, okay, where you do not require, मतलब वो नींबू एकदम से चूसना नहीं है तुमको, ठीक है, ऊपर से देखना है. So then what we do is we do something called as strides. So strides is when we do not want to capture all the data or the information available, so we skip some neighboring cells. Okay, so when you skip the neighboring cells, okay, it looks something like this, right? So here you have got, it's skipping by 2. So if skipping by 2, then here, correct? So it's skipping by 2, so it has 9 strides. So 9 strides kaise hoga? Because here it is, the field input size is 5. You're padding by 2, so 5 plus 2 minus 3. So that will be 7 minus 3, 4. You're skipping by 2, 4 by 2, 2 plus 1, 3. So 3 means 9 times this has to go around. So whenever there's a padding, this has to go 9 times when you are striding. So striding is helping you, right? So once again, when you're doing the CNN, you can change the value of 2 things. You can change the value of the weight and you can change the value of the stride. और ये W और S खाली चेंज करने के बाद, लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर लगाने के बाद तुम्हारा CNN बन जाता है. तो अभी मेरा आधा काम तो हो गया, क्योंकि तुमको जो चीज मालूम थी मैंने वही बताई, कुछ नया नहीं बताया. और क्योंकि कुछ नया है ही नहीं, CNN में सिर्फ यही है और वही हम बताने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. दिस इज व्हाट इज द एलिनेट 5 आर्किटेक्चर. 5 क्यों? क्योंकि उसने 5 लेयर दिए थे. ये मैं एलेक्स के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं उसके पूर्वज के बारे में बता रहा हूं. So that was what Dan Lee-Kun did, and this is what we alienate by architecture, and we are going to go through the same convolution neural network that was designed. Remember, he designed it for handwritten recognition, and that database people still use. बच्चों को पढ़ाने के लिए 3rd year में हम लोग पहले डीप लर्निंग के लिए MNIST database. What is this MNIST database? MNIST database is this handwritten, okay, गोरे मुखड़े पे काला चश्मा, all these black numbers on this white thing.
Hello, sir. Are you connected? Sir, are you connected? Karamchandani, sir. Yeah, I'm connected. Just give me a moment. Okay. There's some call. I'm in the college. There's some call. Just one Okay, second. sir. Okay, okay, sir. Yeah. So we are going to classify these digits. Use that is the MNIST database. Okay, and we are going to classify using this AliNet 5 architecture. 5 मतलब क्या? क्योंकि उसके पास 5 layer थे, right? So let's see, 5 layer, 5 days of the test match. Okay, so we'll start from day 1 to day 5. This is day 0, the preparation where you have to prepare the data. So what is the data? It is 32 cross 32 the image. This is 32. This is 32, and it is 1 means then it is a black and white image. Okay, and we are going to classify digits 0 to 9 using this. So here you have day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. So you have 5 days. Okay, so you are going to do convolution, sampling, neural network. 5 दिन, right? So that is what तो मैंने जो सब सिखाया है मैं वही तो बोलने वाला हूँ एकदम same. That is what it is done, and here it is the final neural network which we use. Okay, so let's go day by day. Remember, we have got a 32 cross 1. Let's go to day 1. This is your day 1. We are going to look at the convolution layer. Oops. Yeah, we are going to look at the convolution layer 1. So if you look at the convolution layer 1, it is 32 cross 32. And as I said, filter size. What is the filter size? देखो इधर सब लिखा हुआ है, ये बेचारे सब काम करके दिया है मुझे, ये उसी का ही उठाया हुआ है, मैंने कोई अपना नहीं बनाया. So ये 5 cross 5 है filter size. This is 32 cross 32. तो मैंने क्या बोला था, ये क्या आएगा 32 minus 5 plus 1, so 27 plus 1 28. तो इधर आया 28 cross 28. तो ये 6 कहाँ से आया? क्योंकि ऐसे 6 फिल्टर यूज किए उसने. भैया बोला एक लो पास फिल्टर डाल दो, एक हाई पास फिल्टर डाल दो. वो 6 जो मैंने दिखाया था ना वहां पर वो पूरा आइडेंटिटी और शार्पनिंग और वो ये वही 6 है इधर दिखते ये. दिस इज 5 cross 5. आई मीन ये 6 कॉलम है बट एक्चुअली दिस इज 5 cross 5. ऐसे 5 cross 5 के 6 कर्नल है, कर्नल. ठीक है, तो ये क्या किया, ये वाला कर्नल इसके ऊपर डाल दिया. सो देन इसके ऊपर डाल के इधर यहाँ पे कन्वोल्यूशन किया, यहाँ पे कन्वोल्यूशन किया, फिर एक नीचे स्टेप किया, तो ये एक लेयर बन गया इसका ऐसा. ठीक है, फिर ये दूसरा सेम पूरा महाभारत किया इसके ऊपर, फिर वापस ये दूसरा लेयर बन गया. ऐसे करते करते ऐसे 6 लेयर बन गए. यार ये कौन वन, इसके लिए कौन वन का डब्बा ना ऐसे बड़ा मोटा दिखता है बिकॉज वो ऐसे ऐसे वो लोग ने 6 फिल्टर इधर अप्लाई किए. नंबर ऑफ स्ट्राइड इज 1. नहीं को बाबा है इंफॉर्मेशन कम, उसमें भी क्या मैं उसको छोड़ दूंगा, इसके लिए स्ट्राइड इक्वल टू 1. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज योर लेयर नंबर 1. डे 1 इज ओवर, वेरी सिंपल. ओके, लो पास हाई पास फिल्टरिंग कर लिया. ओके, नाउ दिस इज डे 2. डे 2 इज कॉल्ड एज द पूलिंग. ओके, सो पूलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, वी विल डिस्कस अ फ्यू. ओके, सो पूलिंग में क्या है, एवरेज पूलिंग इज डन. Okay, average pooling of a matrix of size 2 by 2 and a size of 2. So क्या हो गया, ये जो तुमने 28 क्रॉस 28 किया है उसको उसने पूलिंग कर दिया. पूलिंग का दूसरा नाम क्या है डीएसपी वाले सब, इट इज कॉल्ड एज डाउन सैम्पलिंग. ठीक है, डाउन सैंपल कर दिया. तो 28/28 का ये 2 का शिफ्ट करके और उसने कर दिया तो 14 क्रॉस 14 का बन गया. तो ऐसे 14 क्रॉस 14 के हर 6 लेयर में अप्लाई कर दिया तो 14 क्रॉस 14 के 6 लेयर बन गए. तो भैया बन गया आपका डे 2. ठीक है, फर्स्ट डे पे सब लोग ने आके रन बनाए, सेकंड डे पे कंसोलिडेट किए फटाफट. अभी जब जाएंगे डे 3. सो रिमेंबर हमें नींबू को चूसना ही चूसना है. तो भैया चलो कन्वोल्यूशन लेयर 2 पे चले जाओ. Now once you have got this, so no, the rest is all simple. There's nothing to be told, in fact. Okay, so what I said was pooling is nothing but 2-dimensional sampling. It is a lossy process and also it is used for dimensional reduction. And also I told you that
व्हाट वी नीड इज वी नीड स्पार्सिटी, जितने जीरो हो सके उतना अच्छा, तो निकल गए सब वहां से, राइट. सो एवरेज पूलिंग में क्या होता है, we'll discuss. Okay, so these are the 4 pooling, and it also reduces overfitting. I have kept a slide in the end about what is overfitting. Okay, ठीक है. So 4 तरीके के पूले डाउन सैम्पलिंग होता है, एवरेज, मैक्स पूलिंग, ग्लोबल मैक्स पूलिंग और ग्लोबल. ये नाम से पता चलता है कि भैया क्या है, लेकिन फिर भी I'll discuss. So what we've done is, ये मैंने यही रखा है कि आपने ये कर्नल इधर इस इमेज पे अप्लाई किया और आपको ये वाला बॉक्स आया आउटपुट पे. अब इसका हम पूलिंग करेंगे, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम इसको पूलिंग करेंगे, डाउन सैंपल करेंगे. ये कर्नल आपने यहाँ पे अप्लाई किया और ये वाला साइज इधर आया, ठीक है. सो मैक्स पूलिंग क्या करता है, मैंने बताया स्ट्राइड ऑफ 2 करता है. सो मैक्स पूलिंग मतलब क्या, ये 4 का ये 4 लिया, इसका मैक्स वैल्यू क्या है 4. सो यू रिप्लेस इट बाय, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड पे देखो इधर, राइट. फिर स्ट्राइड ऑफ 2, स्ट्राइड ऑफ 2 मतलब ये 4 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 4, राइट. सो मैक्स पूलिंग हो गया. अभी सिमिलरली एवरेज पूलिंग में क्या करेंगे, वापस ये वाला 4 लिया, ये वाला 4 4 4 एवरेज कर दिया और इधर आ गया, राइट. नाम बड़े है CNN. ओके, ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट. Okay, now I think so I have differentiated between, yeah. So when do you use max pooling and when do you use average pooling? So this is max pooling and here it is average pooling, right? So what is max pooling? And first of all, it is very cheap replacement of convolution layer. ना पहले दिन पे इतना मेहनत करने का, मल्टीप्लाई शिफ्ट ऐड, दूसरे दिन पे क्या करने का, सिर्फ छक्के मारने के. So it's like cheap replacement. You are just doing computations which are very simple. Okay, next important, these are the important things. Max में क्या है, objects of interest likely to produce the largest pixel value. मतलब क्या, जो अगर आपको इमेज में, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो वो क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा निखर आएगा. तो सबसे ज्यादा निखर आएगा मतलब उसका सबसे फीचर प्रोमिनेंट होगा. सो मैक्स पूलिंग विल बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू डिटेक्ट द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर, राइट. तो निखर आया है. एवरेज पूलिंग इज व्हाट, it is sort of a replacement. So it retains much information about the less important elements of the block. ये most important features, ये less important. अब जैसे अगर हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट करते थे बच्चे, वो सैटेलाइट से इमेज को ना, सैटेलाइट की इमेज को क्लासिफाई करते थे. क्लासिफाई करते हैं मतलब वो पानी वाली इमेज कौन सी है और वेजिटेशन वाली कौन सी है. तो ऑफकोर्स पानी है तो ब्लू है और वेजिटेशन है तो ग्रीन है. तो जब आपको पानी और वेजिटेशन के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो आप ऑब्वियसली मैक्स पूलिंग करेंगे, राइट. मोर ऑफ ब्लू एंड मोर ऑफ ग्रीन. अच्छा, लेकिन अगर आपको वेजिटेशन के अंदर करना है कि घनी घास है या कम घास है या लैंड है, या तो उसके लिए विद इन दैट लैंड इफ यू वांट टू हैव फीचर्स, देन ऑब्वियसली यू विल यूज एवरेज पूलिंग, राइट. ओके, so max pooling simply throws most of the information by picking a maximum value. Average pooling sort of blends them in, right. सब वो निखर आता है, वो अंदर ही अंदर उसको अंदर ही अंदर के वैल्यूज वो निकालने की कोशिश करता है, राइट. नाउ ट्रांसलेशन इनवेरिएंस वो ठीक है. सपोज देयर इज अ चेतक घोड़ा है तुम्हारा, तो यू हैव अ वीडियो, चेतक घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा जब दूसरे फ्रेम में दौड़ेगा तो भी क्या होगा, वहां पे भी तुम मैक्स पूलिंग कर सकते हो और तुमको वो यू कैन डिटेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट. सो इवन दो द ऑब्जेक्ट शिफ्ट्स इन द पर्टिकुलर इमेज, दो नॉट मच, इफ शिफ्ट्स इन द इमेज देन मैक्स पूलिंग कैन लोकेट इट. वो जा नहीं सकता, ठीक है. हाउएवर द प्रॉब्लम विद मैक्स इज दे डू नॉट प्रिजर्व लोकलाइजेशन. ये बंदा वो कर नहीं सकता. अब इसका मतलब क्या, प्रिजर्व लोकलाइजेशन, लुक एट द फिगर ऑन द राइट. ओके, अभी ये वाला और ये वाला, राइट. अगर आप इन दोनों में मैक्स पूलिंग करेंगे ना, तो वो बोलेगा, ये क्या बोलेगा, अरे बाबा ये भी फेस है और ये भी फेस है. सो बिकॉज वो क्या है, वो प्रोमिनेंट फीचर देखते हैं, भैया आंख है, कान है, नाक है, तो भैया ये फेस है, ठीक है. बट वो, सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस, इट डज नॉट प्रिजर्व लोकलाइजेशन. भैया आंख कहाँ होनी चाहिए, कान कहाँ होना चाहिए, वो नहीं देखता. इसको भी फेस डिटेक्ट करेगा, इसको भी फेस डिटेक्ट करेगा, राइट. सो दैट इज वेयर you have to decide whether to do max pooling or not. Okay, and then application is max pooling is classification and segmentation, और यहाँ पर है it is the region of interest to identify the complete extent of the object. अब ये मैंने लास्ट पॉइंट क्यों लिखा क्योंकि जब आप CNN कर रहे थे ना पीछे,
तो उधर वो CNN वो उसने भैया ने ना एवरेज पुलिंग यूज किया, दो इट इज जस्ट अ नंबर. मैंने बोला था याद रखना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो वो इट इज जस्ट अ नंबर, but yet he has used average pooling because you know you have to, he's here it is more an example of region of interest, you know, then classification and segmentation problem. This classification segmentation problem, because when you have more of, you know, lot of objects and you want to detect the more prominent objects, so here therefore I think he has used average pooling and not max pooling in that. So this is what is your max and average pooling, and this is where हमें ना थोड़ा बहुत अपना दिमाग चलाना पड़ता है कि कौन सा वाला पुलिंग कहाँ यूज करना, ठीक है. तो नेक्स्ट, yeah, so next is a small thing I want to include before I go ahead. This is called as now see, this is the object C, okay. इसके ये कन्वोल्यूशन फिल्टर ऑफ 4x4 अप्लाई किया, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आया और उसको मैक्स पुलिंग करके ये C हम लोग ने यहाँ डिटेक्ट कर दिया, ये वाला C हम लोग ने यहाँ डिटेक्ट कर दिया, ठीक है. ओके, अभी ये C अगर शिफ्ट हो गया तो भी ये डिटेक्ट हो जाता है इधर, ठीक है. ये C इधर शिफ्ट हो गया तो भी मैक्स पुलिंग से तो ये आ ही जाएगा, राइट. अगर वो ये जो चेतक घोड़ा अगर बहुत ही फास्ट भाग गया, ओके, सो ये ट्रांसलेशन इनवेरिएंस भी तुम्हारे काम नहीं करता. तो CNN में करने के लिए, और दिस इज अनदर साइड ट्रैकिंग, दिस इज अनदर साइड ट्रैकिंग. मेरे पास ना डेटा, अभी उस दिन क्या हुआ, किसी को ना ये करना था, प्रोजेक्ट करना था बर्न्स, जो हाथ पे बर्न्स होते हैं ना, तो उसको डिटेक्ट करना था. भैया वो तो कैगल पे डेटा अवेलेबल नहीं है, कहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना है भैया. तो देखो वो बेचारे ने गूगल किया पूरा, जितने भी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इट्स अ वेरी एमेच्योर जॉब, ठीक है, थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए कोई काफी है. तो उसने सब गूगल किया, इमेज को सबको कर दिया 256 पे ग्रे इमेज बना दिया. अब बोला ये डेटा से तो भैया CNN तुम्हारा नहीं चलेगा. तो उसने क्या किया, इधर उसको ये वाला स्लाइड इधर काम आया. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेटा ऑगमेंटेशन. ओके, सो डेटा ऑगमेंटेशन में क्या है, you want to train our network on a large shifted images to make it more translation invariant to large shifts, that it is data. अब ये डेटा ऑगमेंटेशन के बड़े बड़े वर्ड्स है, जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं सोच रहा था क्या है, लेकिन इट इज व्हाट, यू नो, इट इज जस्ट एक इमेज लिया, उसका मिरर इमेज निकालो, उसको 45 डिग्री घुमाओ, 30 डिग्री घुमाओ, जितना तोड़ो मरोड़ो और वो अलग इमेज बन जाता है. so that is called as data augmentation. so it is as simple as that. और रैंडम क्रॉपिंग ऑफ इमेज, मिररिंग, कुछ भी आप नाम दे दो, ठीक है. ओके, और अगर वो DSP वाले बोलेंगे तो आप वो बोलेंगे इन्वर्ट कर दो. इट इज लाइक दैट. so you're just performing 2D signals with certain operations so that the content of the image is remaining the same. Okay, right. So data augmentation is also important if you want to increase the data set. Right. Okay. Now I think we are on day 3. Right. Day 2 के बाद एक दिन का break होता है. So we were discussing about max pooling and average pooling. This is convolution layer 2. This is day 3. So once again, if you observe, अब same घिसा पिटा story. This is what did you do? What did we do? Average pooling से 28/28 का 14/14 हो गया. उसके बाद वापस दूसरा convolution layer लाया जिसके ऊपर भी ये जो filter है वो लोग ने same रखा. तो वापस वही होएगा 14 - 5 + 1 तो 9 + 1 10. बट इधर इन लोग ने क्या किया है, 6 नहीं इधर 16 फिल्टर अप्लाई कर दिए हैं. ठीक है, तो बोला है कि और थोड़ा नींबू अभी फेंकने का ही है तो और थोड़ा उसको खरोड़ो और बहुत सारा. सो ऑल दिस बेसिकली हियर, ऑल दिस इज योर डिफरेंट कार का बॉनेट है, लाइट है, बॉडी है, सब ऑल दिस इज व्हाट हियर. ओके, आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर ग्राफ when we are doing the features for this. So that is what, and if you see the size of the convolution is n minus f upon s plus 1, so you will get 10 and the 16. And then once again you do average pooling, and then if you do average pooling day 4, yes, day 4 of the test match. Okay, so you do average pooling, and then this 10 × 10 becomes now 5 × 5, right? And it is again 16 on this. So imagine, you know, you are not only squeezing the information, but you are removing the redundant information. You are trying to make, instead of this, you are just putting it like the Fourier transform, energy compactation.
राइट, ये 5x5 पे सब इंफॉर्मेशन भरी हुई है, राइट। अब जाएगा लास्ट लेयर, इट इज कॉल्ड एज द फ्लैटेंड और द फुल्ली कनेक्टेड लेयर. Are we going there? Let's see. Yes. So this is the fully connected layer or the neural network. जो बेचारा 2000 से चले आ रहा है. These two part. This part is this whole story here. So now let's look. What did we have? Now see, what did we have? We had before we got to this fully connected layer, we have 5x5x16. Now if you multiply 25x16, so 25x16 is 400. हाँ, उस पे भी कर सकता हूँ. एक मिनट. हाँ, चलो 25x16 is 400. ये fully connected layer है. तो ये है ना 120, वो आपका ये 120 है, करेक्ट. और फिर आपका सॉरी नहीं, ये जो ये this is 25x16, so 25x16 is 400. So यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये 400 का ये जो ये 400 ऐसा है ना, इसको पूरा चप्पट कर देते हैं. चप्पट करने के बाद इधर न्यूरल नेटवर्क पे 400 न्यूरॉन्स बनाते हैं. यहाँ पे लोग, यार क्या हो रहा है. The time I required the pen, it is happening like this. Okay. Will I be able to write here? Okay. So here you have 400 neurons like this. Okay. Then you have 84. Then you have 120 neurons. Okay. So this is missing out here. This is the neural network here. This is your 400 neurons. Then it is interconnected to another layer of 120 neurons. And then you have this 84 neurons. So this 120 is your hidden layer. जो neural network में आपका hidden layer बनता है, this is your 120. This is your 84. Okay. And then you have these 10, which are the output layers. This 10 correspond to the semantic learning. Car, truck. Remember I showed you car, truck, van, all this. So depending on this particular, the values or the outputs at this particular node. Okay. So suppose this node output is 0.9. So that means it is that object corresponding to 2 and not the remaining ones. So this neural network, how it behaves, we already know. Even if you don't, I will cover up in the remaining side. So this is the process called as segmentation. Okay, the process of linking, semantic segmentation, knowing the object, the process of linking each pixel in image, each pixel in the image to a particular class. So these are the 10 classes. This is the entire neural network structure which you have made. This too will be the hidden layers, but in here they are called as the fully connected layers. So this flattened layer, fully connected या flattened, ये 400 को पूरा ऐसे न्यूरॉन्स बना देते हैं. 400 न्यूरॉन्स यहाँ पर, और फिर वो 400. I can do it. Okay, so here you have 400 neurons. Okay, then you have a layer here. For those who don't know neural network, I am doing this. This is your 84 neurons, and here you have 10 particular classes, and the neural network behaves that these are the weights of the network. Each of them is interconnected to the hidden layer. More learning, and then finally to this particular output. Right? So CNN के अंदर neural network है तुम्हारा. Right? Next. Right? So what happens is, these are the feature maps in the end which you got. Okay. So ऐसे तुम्हारे को लास्ट में कितने फीचर मैप मिले? 16 फीचर मैप मिले. तो ऐसे ये 16 का ये एक फीचर मैप को आप ये पहले एक सिंगल लाइन बना देते हैं, फिर दूसरे फीचर मैप को आप एक सिंगल लाइन बना देते हैं. ऐसे करके आप ये पूरा इसको फ्लैटन कर देते हैं. राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर. Of course, the remaining two were the global max pooling that you know,
right? So instead of taking 2, 2, now we take the whole particular image and we say that is the max of this. So that is your global max pooling. And this is your global average pooling. So the fully connected layers, okay, they are put here, and then the average of this is taken. Then the average of this is taken and given to the output nodes. This is just the same. This is global average pooling, right? So you take the entire thing. You don't take tukda tukda. Okay, and this is what we were doing in this particular. We were doing it with digits. Remember, we were doing it with digits, but now here we look at this car. Okay, right? And these are the actual features which Lee Kun had extracted. If you are giving to the car like images where there's this car, truck, and man, we're talking about this. So when you have the low level features, you can see the color, correct? Then here you can see this part here, which corresponds to the tire. And then you have this blue color here. So they have this blue color here, correct? So the low level features will give you the information about the car, right? And then you have the high level features, which will give you information about the edges over here. So here you have all the edge information. And somewhere middle of these two, you will have the features also and the edges also. So this is what I think. There's one more face the database also, which we've done. Yes, I think this will be more clear here. So if you see the low level features, you've got the hair out here, okay? And then this is the white part, okay? And here you've got all the borders here, black and white, wherever there's a black and white thing here. And here the high level features is the most component, the edges of the face. So this is what is there inside your CNN, nothing else. It is just high pass and low pass filtering, right? Yes. So, and I said I'll talk about overfitting and what do we do to prevent overfitting. You know, so what is overfitting? Basically, very important part when we do CNN or neural networks. Okay. इसमें क्या है कि जैसे अब बच्चा क्लास में बैठा है, वो क्या करता है, जो टीचर ने पढ़ाया है वो ही पढ़ के जाता है एग्जाम में. फिर टीचर ने थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा तो वो बोलेगा भैया मुझे तो ये प्रॉब्लम टीचर ने कराया ही नहीं. तो ये ओवरफिटिंग का भी यही चक्कर है. ठीक है, अगर तुम्हारी डेटा वो क्या है, ये जो डेटा है ना ऐसा है, अगर डेटा ऐसा है तो वो ऐसा ही सीखेगा, अगर डेटा ऐसा ही है तो इट विल गो ऑन फॉलोइंग द डेटा ओनली, राइट? सो इट विल नॉट, सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एज ओवरफिटिंग. जैसा डेटा है वैसा ही है, मतलब दूसरा कोई नया डेटा टेस्ट में आ गया तो उसको वो क्लासीफाई ही नहीं कर पाएगा, राइट? सो ओवरफिटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? सो ओवरफिटिंग के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू. सो आई थिंक आई हैव पुट इट ऑन दिस स्लाइड. ओके, so either you have a balanced data set or you sometimes you can reduce the number of epochs. मतलब जब हम weights को train करते हैं तब आप उसको reduce करते हैं, वो जब आप weights को train करते हैं हम उसको बार बार train करते हैं, again and again, updation बोलते हैं, weight updation बोलते हैं. मतलब जो न्यूरल नेटवर्क के जो weights है और जो आउटपुट है, जब तक वो आउटपुट साला बराबर आउटपुट देगा नहीं तब तक वो मैं weight change करते जाऊंगा. और वो weight change करने का एक इक्वेशन है जो मैं आगे बताने वाला हूँ. ठीक है, सो वो वेट चेंज करने के लिए हम लोग बोल दे कितनी बार चेंज करेगा, 10 बार चेंज करने का, 15 बार. लेकिन इफ यू डू फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ टाइम्स, लॉन्ग नंबर ऑफ आइटरेशंस, देन देयर इज अ चांस ऑफ ओवरफिटिंग. सो यू हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एटम्स. और इन सीएनएन अभी ये नया आया है, सीएनएन में क्या बोलते हैं, ड्रॉप आउट करने का. ड्रॉप आउट फक्त ट्रेनिंग सेटला ड्रॉप आउट करायचं. दैट मीन्स व्हेन यू आर ट्रेनिंग द डेटा, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फिगर ओवर हियर, देन यू नो बाय इन वन आइटरेशन इट इज टेकिंग ओनली some neurons. देखो अभी ये दो लेगा, कभी ये दो लेगा, ऐसे करेगा, right? So this is basically the architecture of your neural network. These are your first input neurons, these are your output neurons, and these are the hidden layers, right? So hidden layer में ये बोलता है मैं ड्रॉप आउट करता हूँ. उसमें प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं आप. ड्रॉप आउट इक्वल टू 0.5 मतलब 50% ड्रॉप आउट, 0.2 मतलब 20% ड्रॉप आउट, मतलब बीच के 50 नोड्स काम ही नहीं करेंगे. एंड एवरी आइटरेशन आल्सो यू कैन चेंज. ओके, सो उससे क्या होगा, आप उससे फायदा क्या है कि ओवरफिटिंग क्यों नहीं होगा, बिकॉज आप तरीके डेटा का अलग अलग कॉम्बिनेशन आते जाएगा, और वो डेटा का अलग अलग कॉम्बिनेशन आएगा तो दैट मीन्स यू इट विल अंडरस्टैंड ऑल डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द डेटा. दैट इज द होल फायदा ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क. इट शुड अंडरस्टैंड all the patterns that you are able to give, correct?
right? So in this way, it does not contribute to the forward or backward production, but it actually understands what the data patterns are. That is what this is dropout, and it will help you to prevent overfitting, right? Okay. So this is your typical convolution layer. Okay. We will talk about, so these were the filters. You're convolving in this filter, right? And then you're pooling. After pooling, you're connecting it here to this NN, and then you're applying this ReLU activation function, right? So we will now discuss the activation function. What is this activation function? जब पूरा CNN तुमको weights दे देता है, न्यूरल नेटवर्क क्लासिफाई कर देता है, उसके बाद एक थ्रेशोल्ड रखना पड़ेगा, तुमको एक बैरियर रखना पड़ेगा. भैया ये वैल्यूज आया तो वो कार है, ये वैल्यूज आया तो ट्रक है, ये वैल्यूज आया तो वैन है. तो वो अलग अलग वैल्यूज कौन डिसाइड करता है? वो ये रेलू फंक्शन डिसाइड करता है. ठीक है. सो और खाली रेलू नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्टिवेशन मतलब क्या? एक लक्ष्मण रेखा, राइट? वो लक्ष्मण रेखा के अंदर क्या है, वो लक्ष्मण रेखा के बाहर है. So that is what we are going to do, and we are going to see how to find this out. Right? So I'll just skip this. Yes. So let's go and revise a bit of neural networks. Right? मैंने तुमको क्या बोला कि there is your input neurons. ये आपका input neuron है. They are multiplied by filters or weight or kernel. Right? And there is certain bias. ये bias, ये जो B0 है ना, वो bias है. Bias मतलब क्या? वो मैंने बताया ना, न्यूरल नेटवर्क एक लाइन बनाता है, तो अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे बननी चाहिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गई तो ओरिजिन के थ्रू गई तो लफड़ा हो जाता है. स्ट्रेट लाइन के थ्रू ओरिजिन के थ्रू गई तो कुछ फायदा ही नहीं है ना, वो हमेशा यही लाइन को पकड़ेगा. इसके लिए देयर इज अ बायस इज नेसेसरी सो दैट द स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओके, सो दैट बायस वो पड़ा रहता है, ज्यादा तकलीफ नहीं देता है तुम्हारे को, राइट? सो बेसिकली what neural networks does is these input layers is multiplies by this particular weight and it keeps it there. But the problem is that data, you know, car, trucks, vans, digits, numbers, everything, agar aap jo bhi dekho, it is not a linear data, right? The data is always a non-linear data, right? So in order to अभी भी आप देखो, अगर मैंने ये इक्वेशन देखो, अगर डेटा नॉन लीनियर है तो उसका मैथमेटिकल मॉडल भी नॉन लीनियर होना चाहिए. डेटा लीनियर है तो मैथमेटिकल मॉडल भी लीनियर होगा. जैसे मैंने y = mx + c वो निकाल देगा. सो मेरे को अभी वो न्यूरल नेटवर्क भूल जाओ 2000 का, भी मुझे उसको नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करनी है उस न्यूरल नेटवर्क में. सो दिस इक्वेशन इफ यू लुक, इट इज आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस input neurons by these particular weights, okay, which I told you happens in the fully connected layer, then it still becomes, this is all goddamn linear. Can you see any non-linearity? No. But the world is full of non-linear problems. So in order to introduce this, जानबूझ के कीड़ा करने का, so in order to understand, you know, जानबूझ के मतलब आपको नहीं तो डेटा पैटर्न समझ में ही नहीं आएगा. ठीक है, तो you have to understand, you have to put some non-linearity in the network so that it does not classify like this. Okay, this is the classification. For two-way class, it creates a boundary like this. It does not create a line. So if you see, this is a non-linear equation, this is a linear equation. अगर 3 classes है, so therefore 3 classes है तो 2 लाइन की जगह पे ये एक पैराबोला करेंगे तो आपको 3 classes में वो हो जाएगा. ठीक है? So this non-linearity has to come. Okay, this non-linearity has to come. How do we get this non-linearity? From those equations, we introduce an activation function. Oops. Yes. So as I said, वो क्या करता है न्यूरल नेटवर्क? ये लाइन का इक्वेशन बनाता है. ये इक्वेशन, okay. How does the neural network work? This is the line w1x1 plus w2x2. Right? This is the equation of the line plus b. Right? So अगर मैथमेटिक्स समझ में नहीं आया तो भी ये ध्यान में रखो कि ये वाले लाइन का ये इक्वेशन है. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो देयर इज वन क्लास, अगर ये लेस देन 0 है तो ये दूसरा क्लास. तो आपको न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, वो सब ना बत्ता बच्ची करने के बाद सिर्फ एक लाइन बनाता है. ठीक है, तो अभी आपको इसमें नॉन लिनियरिटी डालना है. ओके, सो वंस अगेन, दिस इज द इनपुट न्यूरॉन्स ओवर हियर. This is what is the output. Okay,
राइट ना आउटपुट, ये आउटपुट इसको मशीन लर्निंग वाले बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। अभी ये क्या है, y is the actual output, a is the output which you get from the neural network। मैंने बोला ना वो हिडन लेयर है और ये सब है, वो भी तो हिडन लेयर करता क्या है, तो वो देखते हैं हम वो हिडन लेयर यहाँ पे क्या करता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, इधर इनपुट न्यूरॉन दिया, राइट, उसने ये लीनियर कॉम्बिनेशन, उसने क्या किया, ये इनपुट न्यूरॉन को ये वाले वेट से मल्टीप्लाई किया, ये वाले वेट से मल्टीप्लाई करके इधर आया, फिर उसको तो एक थ्रेशोल्ड दिया, एक्टिवेशन मतलब आपका क्या बोलने का, थ्रेशोल्ड दिया, इधर आया, फिर ये साला एक और आउटपुट न्यूरॉन, तो इसको इसने क्या किया, एक और वेट से मल्टीप्लाई किया। रिमेंबर 2 लेयर थे, 84 वाले और 20 वाले, तो एक 84 वाला एक 20 वाला और बाद में उधर भी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो वापस इसको क्या किया, ये मल्टीप्लाई किया, वापस इसको एक एक्टिवेशन नॉन लीनियरिटी डाल दिया और ये आउटपुट। बट ये आउटपुट में क्या करूंगा, एक आइटरेशन के बाद तो खत्म नहीं कर सकता ना, खत्म करूंगा कब, तब जब ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट का के बीच में डिफरेंस एकदम कम होना चाहिए, राइट। सो मैं क्या करता हूं, दिस हैज टू बैक प्रोपगेट, राइट। सो व्हाट डज इट डू इज, ये क्या करता है, ये दोनों के बीच में एरर कैलकुलेट करता है और ये एरर को ये पीछे लेके जाता है, भैया कि तूने जो मेरे को आउटपुट दिया है ना वो मैच नहीं करता, मेरे आउटपुट से बहुत दूर है, तो मुझे उससे करीब लाना है। तो करीब लाने के लिए उसको बताना पड़ता है, भैया इतना एरर है, तो उतना एरर कैसे करता है, लुक एट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट इज द बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम दैट योर न्यूरल नेटवर्क परफॉर्म्स। Now those who have done neural networks will find this very easy or repetitive. It is for those who have not done neural networks. Okay, so ये भैया बोलता है ये मेरे को this y and a has to be close to each other. It is very far. There is an error. So भैया ये error क्या है वो बताओ. So what does it do? You know this is a trace. But ये सब MATLAB Python में ये trace दिखता नहीं है because सब कुछ MATLAB और Python आपको खुद से अंदर से निकाल के दे देता है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो सब अंदर की बात है, ठीक है। तो क्या बोलता है, देखो पहले ये थीटा ये कहां से आया, ये न्यूरॉन को ये लीनियर कॉम्बिनेशन लगाया, फिर एक्टिवेशन, फिर जो आउटपुट आया वापस उसको एक वेट से मल्टीप्लाई किया, वो करना ही पड़ता है बिकॉज उतने लेयर आपने डाले हैं सीएनएन के अंदर, फिर ये आउटपुट न्यूरॉन है। तो अभी क्या करेगा, एरर देखेगा, तो एरर करने के लिए क्या करेगा, देखो लुक एट दिस एक्सप्रेशन, कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्टिवेशन फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन, दूसरा कलर ले सकते हैं क्या, cost function with respect to activation function, फिर activation function with respect to this। मैं इक्वेशन में नहीं जा रहा हूँ, बहुत गंदा होगा, तो मैं बता रहा हूँ ये नहीं। फिर वापस क्या इधर तक पहुंचने का भैया तेरे को, तो फिर इधर से वापस इसका डेरिवेटिव देखो, Z3 with respect to A2 this activation, then this activation function to this, correct। so ये सब डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करता है, this is J theta with, look at this is the error J theta with theta 1, error of this भैया बोलता है ये theta 1 और theta 2 उसको ये दोनों वेट को ऐसा बनाओ कि ये डिफरेंस मेरा एकदम कम आए। That is the whole object how what neural network works. And what the hell are this theta 1 and theta 2? Theta 1 and theta 2 are the weights or the kernels. Right? So you have to make this theta 1 and theta 2 small. इसके लिए वो घड़ी घड़ी बोलता है भैया अभी भी एरर ज्यादा है, कर ना कुछ, फिर वापस theta 1 अपने आप को चेंज करता है, फिर वापस ये कैलकुलेट करता है, वापस ये एरर इधर बताता है, ऐसे चलते जाता है। मैंने बोला था ना बार बार करने का, epochs. So that epochs are done till theta 1 and theta 2 are such that this error is minimum. So this is how basically the error is back propagated into the system. ठीक है, to understand. Right? तो पहले लोग क्या करते थे, सब कार वैन के फीचर्स आप लोग क्या करते थे, हम सब पाइपलाइनिंग करते थे, फीचर्स ये न्यूरल नेटवर्क इनपुट न्यूरॉन को देते थे। अब फर्क सिर्फ ये आया है कि वो CNN मॉडल में आप वो खुद हैंड से कर रहे हो, आप डायरेक्टली PCA वेवलेट कंट्रोलेट अप्लाई नहीं कर रहे हो, राइट। बाकी न्यूरल नेटवर्क रिमेन्स एब्सोल्युटली द सेम, देयर इज नो चेंज इन दिस, दैट इज व्हाट हैपेंस, एक्सेप्ट द फीचर्स आर गिवन टू दिस न्यूरॉन्स via the convolution layers, right? Okay, so now we were talking about ये मैंने दोनों क्यों मिक्स किया, बिकॉज मैंने तुमको बताया दिस एक्टिवेशन फंक्शन देयर हैज टू बी सम नॉन लीनियरिटी, करेक्ट। तो पहले बात तो एक्टिवेशन फंक्शन का काम हो गया कि ये नॉन लीनियरिटी बना देता है, नहीं तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन इधर एरर तो कभी डेटा का पैटर्न जिंदगी भर नहीं समझेगा।
So this linear combination is given by an activation function, and then that the theta 1 and theta 2 are adjusted according to the activation function as well. Okay. Now the second important part why that activation function is here. One was the linearity. Okay, to introduce non-linearity. Next is So one, what are the different types of activation functions? Okay. जो जूना न्यूरल नेटवर्क यूज करते थे ना, वो लोग sigmoid activation function यूज करते थे. Now, if you look at the sigmoid activation function, it is the activation function in blue. Okay. Now, what is the use of this activation function? The use of activation function is to introduce non-linearity. ठीक है. अच्छा, अभी जब मैं previous slide पे जाता हूँ, ओके, जब मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूं तो यहाँ पर नॉन लिनियरिटी आ गया, यहाँ पे राइट. लेकिन नॉन लिनियरिटी के बाद इसने क्या किया, ये मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव ले लिया. तो डेरिवेटिव कहाँ लिया है, देखो डेरिवेटिव लिया है z, ये वाला j थीटा विद रिस्पेक्ट टू a3. हाँ, और फिर एक और एक्टिवेशन फंक्शन लिया है, ये वाला z विद, ये वाला z विद, वो एक्टिवेशन फंक्शन का भी डेरिवेटिव आ गया. तो मुझे ना एक्टिवेशन फंक्शन लेने का सिग्मॉइड बहुत सालों तक चला, तुमच्या डोक्यात आहे चलता रहता था. पण तुम्ही जर पहिले हे म्हणून राहिले असं लिनियरिटी के लिए तो यूज किया है, लेकिन हम फंस गए. करना पड़ेगा. आपण बसायचं असं नाही, आपण आपल्याला जसं सांगितलं तसं काम चालू ठेवून द्यायचं. happens is it is active only in this way. You go here, okay, the derivative comes down. So that means you cannot operate. सर एक मिनट, कोई बहुत पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है. झाले शांत बसायचं. 3000 पर्यंत काहीच नाही बोलायचं. थीटा 1 और थीटा 2 को वेट्स है, वो तो साला चेंज करना ही पड़ेगा मुझे. उसको ऐसा करना पड़ेगा कि आउटपुट मिनिमम हो. लेकिन अगर ये डेरिवेटिव ही 0 हो गया तो वो वेट वो चेंज कैसे करेगा अपने आप को, वो चेंज नहीं करेगा. तो इसके लिए क्या, और इवन इफ यू सी हियर, okay, even if you see here the change comparatively is going to be very small, right? So this was a problem with the sigmoid function as the activation, right? Okay, I'll go into this, but just bear with me if you find it very difficult. Okay, just bear with me. Okay, now what did I say, that the weight should be such that the output value, okay, and the expected value have to be very close to each other, right? And you have to find out this particular cost function where the weights are minimum. Okay, but this ये जो theta 1 theta 2 लिया है ना, वो theta 1 theta 2 जो मैंने लिया है, वो ये अभी मैं ये W optimum है, ये जो weights minimum. Okay, तो अभी क्या होता है हर एक आइट्रेशन में, अभी ये जो आपका ये cost function है, let's go a bit into mathematics. Okay, let's go a bit mathematical. ये जो आपका कॉस्ट फंक्शन है यहाँ पर, ओके, ये कॉस्ट फंक्शन चेंज होते जाएगा, ये जे चेंज होते जाएगा, ये डिफरेंस के हिसाब से ना ऊपर नीचे होते जाएगा. ओके, सो नाउ व्हाट यू वांट इज, okay, now you want this j to be such that this cost function has to be minimum. Okay, right? एंड जिस पे ये कॉस्ट फंक्शन मिनिमम आता है, मैंने बोला था ना एरर, ये दिस इज नथिंग बट द एरर. बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन कौन सा, साला एरर ये, वो एरर को मिनिमम होना चाहिए, तभी वो डिफरेंस एक्सपेक्टेड और उसके बीच में कम आएगा. तो ये एरर को मिनिमम होने के लिए पहले सपोज एरर का वैल्यू इधर था, तो वो साले को उसको नीचे जाना पड़ेगा, सो हर एक आइट्रेशन में ना वो जे नीचे जाता है और मिनिमम वैल्यू अटैच करनी, बट इतना आसान नहीं होता. ओके, सो इतना आसान क्यों नहीं होता, बिकॉज यू डोंट नो, तुमको तो इनपुट का वैल्यूज भी नहीं मालूम, अंदर क्या चल रहा है क्या मालूम, बट देयर इज अ वेट अपडेट इक्वेशन व्हिच यू हैव टू जस्ट बेयर विद मी. ओके, सो द वेट अपडेट इक्वेशन इज wi plus 1 is equal to wi minus eta times the gradient, the derivative, you know, the derivative, so delta of j. Okay, this is the weight update equation. Okay, now
now before I come to this, a small thing. If you have a line going like this, you know that it is a positive slope. If you have a line coming down, it is a negative slope. Correct? इतना याद रखने का, ये ऊपर पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे हूं, सपोज मेरा ये J का वैल्यू ये है. ठीक है. मुझे जाना है यहाँ. फर्स्ट मैंने पूरा वो न्यूरल नेटवर्क बना दिया, कुछ तो साला J का वैल्यू मुझे मिला. सपोज वो वैल्यू ये है. हाँ, अच्छा, ये वैल्यू मुझे जाना यहाँ है. राइट. अभी यहाँ से यहाँ मैं कैसे जाऊंगा? ये वाला इक्वेशन से. मतलब ये जो है मेरा थीटा या W है. कोई लोग थीटा बोलते हैं, कोई लोग W बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है. अभी यहाँ जाना है तो पहले मैंने यहाँ से एक लाइन बनाया, ये टेंजेंट बनाया टू दिस. राइट. बिकॉज यू कांट गो बाय द कर्व, यू हैव टू गो बाय द टेंजेंट. तो ये लाइन ऐसा है, ये लाइन ऐसा है, तो इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है. राइट. नाउ दिस स्लोप इज नेगेटिव. नाउ वेयर डज दिस स्लोप कम? This is delta J. This is the slope of the cost function. This is negative. This is some value. This is called as the learning rate. This is, oops. हाँ, अब ये वाला मेरा बच गया, ये वाला बन गया नेगेटिव. ये माइनस क्यों आता है मालूम है? क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आ गया पॉजिटिव. So the next weight, now at this point, this is my W or this is my theta. Now if this is negative, because it is like this, then negative into negative become positive. So Wi plus 1 is Wi plus something. So plus something मतलब weight बढ़ गया, तो weight बढ़ गया मतलब obviously मेरा weight इधर चले जाएगा. ठीक है. तो ये equation से ना ये इधर चलेगा. Now suppose in the beginning I was here. If I was here, I have to reach to this point. I use this equation. So I draw tangent. Line like this, it is positive slope. It is positive slope मतलब क्या? This is positive. Positive into negative is negative. Wi. The next weight or the next theta is this current theta minus. So this current, here the weight was this minus. So this is the way, this is the equation you get. So in order that the cost function is to be minimum. Why the cost function has to be minimum? Because the error between the expected value of the neural network and the observed value has to come down. So how does it come down? By using this equation, you have to monitor this theta. You have to monitor the number of times that theta has to run, and you have to also monitor the direction in which this J comes down. And when this becomes J becomes down, this is your W optimum. Right? हम जब 12th स्टैंडर्ड में सीखते हैं मैक्सिमा मिनिमाइज, अभी मैथ्स के सर को गाली देते हैं, सर ने ऐसा क्यों सिखाया? बट दिस इज द होल हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग. Okay, again borrowed, plagiarized by the data scientist people. Okay, so this is what it is. You have to reach the minimum value by using this particular equation. And now I will just finish it off by saying two other things here. Yeah, so one weight is that this is called as the gradient descent. Gradient means derivative, gradient descent. Derivative कैसे derivative नीचे आता है, gradient descent. Okay, so here you have theta as the weight. कभी theta use करूँगा कभी, and this is the new weight theta is 1, right? Okay, and then you have variation of this. जैसे मैंने बोला एक जन करता है तो दूसरे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं उसके रिसर्च के ऊपर. तो after gradient descent, which is still the Bible, okay, you do neural network, you have to teach gradient descent. You cannot start any course of data science without understanding or knowing the concept of gradient descent. It has to come. It is the my map of everything. Okay, and then इसको वेरिएशन लाने का, कितना वेरिएशन किया? सो इसको ना थोड़ा पहले मोमेंटम देने का. फिर क्या किया? देखो ये ओरिजिनल वेट है, ये तुम्हारा ग्रेडियंट का ये डायरेक्शन है. हाँ, तुमको यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ से मैं ये, and see we are all dealing with vectors. So when you take derivatives, all that derivative looks goddamn simple, but it is goddamn all vectors. So let's not even go into all that. The Chinese are very good at that, by the way. Okay, उनका ही वो पूरा रिसर्च चलता है उसके ऊपर. Support vector machine चाइना से ही आया है कोरोना की तरह. Okay, so now let's see. From here I have to go here. So normally what do? I use this gradient term. Okay, right? And then this gradient term add this जो मैंने बोला ना slope, वो और इधर पहुंचते. लेकिन उसने क्या बोला कि इधर एक ये मोमेंटम लगाओ. So there is the momentum, and finally you reach here. Okay, you reach here by adding this and this. So this is the vector addition of this and this. So therefore
this theta t plus 1 is theta t plus vt plus 1. Correct? This is your theta t. This is your vt plus 1. That vt plus 1 is nothing but addition of this and this. But let's not go into mathematics. What is this whole thing? Now, इधर क्या है? इधर मैं बोला ये झूले के तरह है. हमेशा झूले के तरह नहीं होता. तो क्या होता है? इधर से पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा. वीनर फिल्टर हम लोग ने पढ़ा है, वो सब ऐसे ही जाता है कहाँ पर. तो प्रॉब्लम क्या है कि उसको पहुंचना है यहाँ. वो बोलेगा अरे ये मेरा मिनिमाइजेशन है क्या? नहीं. तो इसके लिए ना उसको थोड़ा मोमेंटम देना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, ताकि it does not get stuck to this plateau. So it gets bifurcated here and it comes down. Then it gets bifurcated, comes down. So this is why the momentum terms. धक्का दे दो भैया कि इधर कहाँ प्लेटो पे वो अटक नहीं जाए. इधर अटक भी गया तो नेक्स्ट टाइम पे इधर वो आ सकता है, right? And there is one more variation to this. Some copycats, Nesterov accelerated gradients. You know, again, Russian scientists living in Belgium nowadays, okay? And so this is called as the look ahead term. तो उसने क्या बोला कि दूरदृष्टि. Okay, so यहाँ से मेरे को यहाँ जाना है, पहले मोमेंटम भी अप्लाई करूंगा और मोमेंटम अप्लाई करने के बाद, मोमेंटम अप्लाई करने के बाद मैं देखूंगा भैया कि मेरा ये वाला थीटा ग्रेडियंट कहाँ जाता है, उस हिसाब से मैं इसको चेंज करूंगा. So this is all play of equations इधर उधर. And again, if you see, it is very simple. That what is the equation of the previous one? See, this equation is the same, previous one. Nesterov, here is some copycats. If you look at Nesterov's equation and you look equation here, see, this equation is the same. खाली इधर ये mu t भी same है. खाली delta L of theta के जगह पे इधर theta plus mu vt है. Correct? तो mu is your mu vt is this. Okay. तो ये mu vt अगर small हो गया, so then this Nesterov expression is also same as the momentum expression. But mainly you have to think कि वो भैया नीचे जाना चाहिए, इसके लिए ये सब manipulation है. These are all mathematical manipulations, nothing else. Okay. Right. And then I told you that sigmoid was out of fashion. So now everybody is using this ReLU as the activation function. There has to be some non-linearity which has to be introduced. So this is the red, the blue line is the ReLU function and it goes from here also. So I told you ReLU का क्या फायदा है ना, वो sparsity भी देता है. क्यों sparsity देता है? क्योंकि जब वो activation function में apply करूंगा ना, देखो जब वो मैं activation function इधर apply करता हूँ, इधर दिखा सकते हैं. हाँ, करेक्ट. इधर जहां मैं एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ, ये न्यूरॉन्स है, इतना सारा वैल्यू है, तो वो क्या कर देगा, इतना सारा वैल्यूज को है ना, सबको फटाक से, जो भी नेगेटिव है ना, वो नेगेटिव वाले को ना, ये सब नेगेटिव वाले को ना ये पूरा जीरो बना देता है. एंड इफ यू सी द डेरिवेटिव इज द रेड वन. So the derivative is always 1. So the derivative is always existing. So there is no वो इधर टेढ़ा मेढ़ा जाने का सवाल नहीं, सीधा बेचारा वो कॉस्ट फंक्शन एकदम नीचे आके गिरता है. Correct? So this is then the last is, okay. So here you apply ReLU function to the CNN. So ReLU function will introduce sparsity and it will give you a set of neurons at the output. And now you have to apply from the output layer, you have to go to the softmax layer. So here you have the output layers of, okay, let me look here. So you have this, yes, 120, then you had 84, then you have 10, correct? So here you have 84 neurons, okay, then you have 10 neurons. यहाँ से पूरा ये ReLU फंक्शन आ जाता है, तो ReLU फंक्शन इधर ये काफी कुछ जीरो कर देता है. अभी आपके पास इधर 10 न्यूरॉन्स है, तो यहाँ से डेटा, ये हर एक न्यूरल नेटवर्क में हर एक को कनेक्टेड होता है. यहाँ पर ये भी हर एक को कनेक्टेड होगा, करेक्ट. और ये 10 न्यूरॉन्स है. नाउ दे हैव टू टेक अ डिसीजन, कार है कि वैन है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके और इसके बीच में जो 84 वाला है और ये जो 10 न्यूरॉन्स है, उसके बीच में वी आर अप्लाइंग, उसके बीच में वी आर अप्लाइंग अ थ्रेशोल्ड
called as the softmax. यहाँ पे सब आंसर्स आ गए, यहाँ पे सब क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे आपको सॉफ्टमैक्स करना पड़ेगा. अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है वो मैं बता रहा हूँ, और ये कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ. दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, राइट. Yes, so this is the softmax layer. Okay, suppose वो जो न्यूरॉन्स है ना, इधर ये ऐसे वाले न्यूरॉन्स है 84 में तुमको दिखाए. I'm just taking example of 2. I can't take examples of 84. So that value of x is suppose -1 and one value is 2. Correct? This is what the softmax function is. वो जो हम ब्लॉक बनाते हैं ना softmax, वो basically this mathematical formulation is done. Okay, so E of xi upon summation of all the exponents. So what it will do is, suppose there are two animals, one is a dog, one is a cat. Okay, और deep learning में CNN वो क्या करता है, सब all the felines and the canines are together. So to separate the felines and the canines. So if you do that, one value is -1 and one value is 2. It will calculate E of x and then it will put here. So here you will say S of -1 and here it will calculate S of 2. ये सब कैलकुलेट करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी दिखाता है. सो सॉफ्टमैक्स ऐसे 10 प्रोबेबिलिटी दिखाएगा वहां पर. तो अभी इधर क्या है, ये प्रोबेबिलिटी 0.95, मतलब ये क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है ना कन्वोल्यूशन, मैक्स पूल, एनएन, सॉफ्टमैक्स. तो ये सॉफ्टमैक्स से ये 10 आता है. तो अभी सॉफ्टमैक्स का ये एक्सप्रेशन है E of xi, मतलब ये क्या आएगा 0.368 डिवाइडेड बाय 0.368 प्लस 7.9 वगैरह वगैरह करके इसका वैल्यू 0.047, इसका वैल्यू 0.953. So he is 95% sure that it is a cat. So here he will say that the output is the cat corresponding to this. Correct? So this is how the softmax function works. Very simple. Okay. Right? Now the only part that is remaining is how to detect the number of convolution layers and number of filters in the CNN. Okay. So deeper networks are always better at the cost of more data and increased complexity. Okay, जितने आप layer बढ़ाओगे, नींबू को चूसोगे उतना अच्छा. You should initially use fewer filters and gradually increase. हमेशा कोई भी CNN में देखो पहले कम filters use होता है, बाद में ज़्यादा filters use होता है. So very small filter sizes will capture very fine details of the image. देखो बराबर आ गया ना, end में image processing पे ही आएगा. So very small filter sizes capture very fine details of the image. On the other hand, having bigger filter size will leave out minus details of the image. So filter का size यहाँ से है और कितने filters use करने हैं वो भी मैंने तुमको बता दिया. हमेशा कोई भी, आज तक मैंने कोई भी एक CNN का मॉडल नहीं देखा जिसमें पहले ज्यादा है बाद में कम है. हमेशा you start, I think it is basically to first classify if it is a car, it's a feline or a canine. And felines can be n number of ways. So within the felines, if you have to classify, then you have to go to the second stage. This is probably which whatever little work I have done in CNN, and I realized तो अगर बिल्लियों के बीच में आपको डिसाइड करना है कि ये है correct to classify among the various different cats, then you have to go into the second part. So first separation, initial separation happens in the first CNN. Okay, right? I guess most of it I have covered. This is going back. Yes. Oh, I got this slide in the end. These are okay. The applications. Most of us are going to be familiar with the character of James Spader's character in The Blacklist, and that is what he says. The FBI has charged $1 million for the face recognition. And they're saying FBI has charged 1 million means they have charged 3 million probably. And so for face detection, this is one of the applications of the CNN, right? So nowadays, what the FBI has is these two face recognition softwares, and I believe that none of them are working on CNN. One is the next generation identification system, where they have mugshots of about 1 billion people, and they actually compare, the difference करके they compare जो minimum difference है
it belongs to that. And second is the face software, facial analysis, comparison, and evaluation. So it has got 411 billion images. Of course, when the blacklist came out, it was 2015. So probably FBI has not caught up to the CNN. But I think so. The next architecture for face recognition will be the convolution neural networks. So these are the applications of CNN. Two of them I'd shown you, the cars and the facial recognition. So here, image classification, object detection, and semantic segmentation, right? Distinguish between a male and a female face, right? So these are the references, and everything I have taken from here or there. And there is one site. So if you're doing a paper on CNN, this is the site where you can, whatever CNN you're making, initial itna filter, baad mein itna filter, all that diagrams can be made using this site, correct? So you can actually make a convolution layer, and you can actually show the downsampling and everything. Very good interactive site, correct? And the code, if you see, this is the small code. It's hardly few lines. Usme sab aa gaya, data ko bhi aa gaya. I think this is the code of the ELINet architecture. Okay, I have it with me. Maybe sometimes later we can do. We're really short of time. Thank you. And this is the AlexNet. This is the AlexNet, actual AlexNet. I've been talking to you about the ELINet 5. This is the actual AlexNet that was that. Thank you. Any questions? Participant have any question, please ask. There is one question from YouTube. Can I take it? Sir. Can I take one question from YouTube? Piyush, I can't hear you. Sir, can you hear me now? Hello? Hello, sir. Yeah, maybe it's here. Maybe the problem's here. Okay, sir. Can I write in a chat box? Piyush, I can't hear you. Sir, can you hear me now? Hello? Yeah, just type on the chat. I think it's fine. You will be probably starting with the next session here. Sir, thank you very much. The session was very nice. You took it very nicely and showed that neural network is not that difficult. Okay, yeah. Could you type the question, because I can't see, I can't hear. Perhaps if you can try speaking. Okay, now there's a question how to deal with computer with low processing power. Yes, so what you can do is you can directly, what my students have been doing is they've been going into Google Colab, use Google Colab as much as you can, it's free, okay, do that. And of course, I just forgot to mention that, GPUs, you have to tell your college to buy the GPU. We are in the process of buying one, because it's GPU, and this is like a truck and a Ferrari. What the computer you're using is still a Ferrari, and the GPU is it's going to be a truck, because truck, it has got loads of information it can carry together, though it carries one time. The poor Ferrari has to go back and forth, so you're still working on a Ferrari, but unfortunately you need a truck, okay, so to carry the vast amounts of data. So you have to afford GPU. Otherwise, you can go to the Google Colab. Okay, I have this. So I've just shared this. You see on Google Colab, you can just, it's hardly few lines of code. You can see this MNIST. Of course, this MNIST is very simple. It's just very small lines of, you can work on Google Colab. At least you can work with 100 odd images.
It's fine. It will do. Sasank sir, please take over. Sasank sir. Yeah. Right. Yes, sir. Okay, then. Thank you. Sasank Thank you, sir, please. sir. Thank you, sir. Thanks a lot for this wonderful session. You have shared a great knowledge regarding CNA. Thank you. Thanks a lot, sir. One minute, Sasank sir. Yes, sir. Right. Okay. Yeah. Yeah. I'll leave. Right. Thanks. Hello, sir. A very interactive and very informative session you have taken. Yeah. Thanks. Actually, Yeah. I feel that you have taken the entire crash course on the CNN. You have started with the neural network and the different architectures, schooling methodologies, different constraints while designing the architecture of the CNN, and then the applications and the scope of the CNN in the real-time practical applications. Really very nicely you have covered. And the one question that was also in my mind, because many of the times when our students are doing the projects, hardware projects, that time the GPU processor, that problem we are facing, and the very nice solution you have given, that even though we don't have the high-speed processors, we can speed up our work and we can go ahead with the Google Colab. So really very informative session, and we really enjoy it a lot. And many practical problems, like while designing the any classifiers, that is a your gradient approach, or the like there is a class how to train the classifier, and those constraints very nicely explained with the simple example. So really we enjoyed the session, and we like to have such kind of the session in future also as well. Thank you very much, sir. Okay, ma'am. Thank you. I'll sign off. Yeah. Thank you. Bye. Sir, we end up the meeting here. Thank you very much, all of you, for joining.